ओके पुनीत, वेलकम टू योर पीडिया। स्टार्ट करते हैं आपका स्टेप फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड। Yes, sir. तो पुनीत, have you seen the brushless induction motor, brushless DC motor? No, sir, I haven't seen it, but I have heard about it. Why we call it brushless? Sir, we call it brushless because it do not have brushes for commutation purpose. So who is doing commutation? Sir, I'm not quite able to recollect this brushless DC motor, sir. Okay. Normal ceiling fan. Have you seen normal ceiling fan? Yes, sir. अच्छा, नॉर्मल सीलिंग फैन का क्या होता है, जनरली कुछ दिनों बाद, एक साल डेढ़ साल बाद उसकी स्पीड अब ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम हो जाती है। Yes, sir. व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन ऑफ? Sir, since the normal ceiling fan have a single phase induction motor, and as we know in single phase induction motor it is not self starting, so to make it self starting we convert it to two phase by various starting methods, and in particular in case of ceiling fan we are using the permanent capacitors. So the permanent capacitor life gets deteriorated as the time goes on, and hence after few years or few months we observe the decline in the speed and performance of the ceiling fans. Okay, because of capacity. Yes, sir, capacitor life gets degraded. अच्छा, ये बताइए, what is the main requirement of to produce a rotating magnetic field? So to produce a rotating magnetic field, there are two major requirements. For it is a combination of these two requirements that results in RMF. And first is windings, three-phase windings should be displaced in space at an angle of 120 degree, and the supply in those windings should be displaced in time by 120 degree. But in case of single phase motor, ठीक है ना, induction motor, we Yes, have two windings and there is also rotating magnetic field. Sir, in case of single phase induction motors, thus it is the starting of a single phase induction motor is based on the double revolving field theory, and we have to create an imbalance, or I should say we have to convert the single phase to two phase for the starting purpose of the single phase induction motors. लेकिन वो तो परमानेंट रहती है, two windings there and there rotating magnetic field also there. Sir, there are two kind of windings, main winding and auxiliary winding, and only during the starting condition the auxiliary winding is connected by the help of is connected, and it is disconnected during the running condition by the help of centrifugal switches. इसको चेक कर लेना. I think minimum requirement at least two winding with two time varying flux at phase difference. Okay, sir. सिंगल फेज में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ना जब टू वाइंडिंग से हम देते हैं सप्लाई. सर एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, तो हम थ्री फेज का तो यूज इसलिए करते हैं कि हमारी पावर बैलेंस हो और क्या बोलते हैं जो हाई टॉर्क मिले हमें, और क्या बोलते हैं अपना स्मूथ टॉर्क मिले. यस सर. लेकिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस विद द टू मैग्नेट
two time varying magnet with phase difference, two time varying magnetic field with phase difference, which can be produced with the help of two windings. Okay, sir. Any question of your? Sir, I did not quite get this thing, how we are getting RMF from a single phase. Single phase. Yes, sir. You just now told no though that two time varying, that I did not When understand. the Can you? single phase winding is parallel, one and having the different phase impedance, then the current in the winding of will be one at phase difference. Yes, sir. फेज डिफरेंस पे है तो दो दो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, वहां पर भी दो फेज डिफरेंस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। Yes, sir. टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। Okay, sir. समझिए? Yes, sir. अगर Sir, but in single phase motors, it's not. It is like during the running condition, the auxiliary winding gets disconnected. So, how are we saying that RMF is constantly present there? okay. But have you seen any switches in the your ceiling fan which disconnect the auxiliary winding? No, sir. It's remain permanent there. Yes, sir. It is a permanent capacitor motor. And secondly, in case of single winding, once the क्या बोलते हैं start rotating, ठीक है ना? तो there is two magnet, one magnet rotating magnetic field, one in forward direction, one in reverse direction. When start rotating in any direction, तो वो forward direction बोलेंगे। तो forward direction में जो EMF जो relative frequency होगी वो F होगी, और रिवर्स डायरेक्शन में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2f होगी। Yes, sir. तो उसका इम्पिडेंस ज्यादा होगा सर्किट का। Yes, sir. रिलेटिव जो फेज अप होगा, तो उसका जो आपका उसको कह सकते हैं कि उसका उसकी वजह से जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगी या फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, क्योंकि इम्पिडेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगी। और उसमें जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, तो इम्पिडेंस कम हो जाती है, तो करंट ज्यादा होती है, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो जो इफेक्टिव होता है उस डायरेक्शन में वो मूव करता है। इसलिए सिंगल फेज मोटर में ज्यादा नॉइज होती है, ठीक है ना, और वाइब्रेशन होते हैं। इसमें दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, रिवर्स डायरेक्शन में भी, बट रिवर्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ओके। अच्छा, इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, Yes, sir. ठीक है ना, Mm-hmm. how we can increase the starting torque? In three-phase induction motor, starting torque can be increased by increasing the rotor resistance. And first is by increasing the rotor resistance, we can increase, and also if we increase the supply current, then also we can increase the torque. How we increase the supply current? Sir, we can use we are using different starting methods. So for example, in case of auto transformer starter, we can do the tappings in such a way that starting current is increased. And also if we increase the terminal voltage, then we can increase the torque. But these are the design parameter. Terminal voltage cannot be increased beyond the permissible limit, and also Yes. the current cannot be increased beyond the permissible limit. Yes, sir.
Most commonly is the increasing of the rotor resistance. Rotor resistance. Yes, sir. But it is not possible in the Squirrel cage. Yes, so sir. what you did there? Sir, in squirrel cage it is not possible. We can if we reduce the frequency, then also we can increase the torque. Like if we decrease the frequency, flux will increase. Yes, sir. Core will get saturated. Yes, sir. फिर क्या करें? Sir, I cannot recall at the moment, sir. V by F का रेशियो कांस्टेंट रखेंगे जिससे कि आपका Yes, sir. Yes, sir. V by F ratio constant करके. Yes, sir. वो हमारा वो और relatively high starting torque can be achieved. Yes, sir. Sir, yes, sir. Sorry, sir. बोलिए. Sir, I was asking that this answer is correct, decreasing the frequency to increase that torque. Decreasing the frequency increase तो कर सकते हैं लेकिन आपको बताना पड़ेगा V by F should constant. So that कि flux हमें unsaturated condition में. Okay, sir. What other methods are there? D bar rotor resistance. ठीक है ना, डबल केज रोटर रेजिस्टेंस. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. P by F method. ठीक है. This method can be used on the squirrel cage induction motor. ठीक है ना. Yes, sir. और rotor resistance method and by connecting the secondary synchronous secondary injection method. Secondary injection method in which rotor circuit में हम voltage injector frequency की voltage supply देते हैं. ठीक है ना. उससे हम speed control कर सकते हैं. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को बताइए, अगर मैं रोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 कर दूं तो क्या मोटर स्टार्ट होगी? Sir, 0 कर दो, लॉसेस कम होंगे, क्या होगा बताओ? Sir, if rotor resistance is 0, then slip will be 0. And it means the speed of the rotor would be same as the synchronous speed, and it would be a disadvantage because it will instantly draw very high current, which might damage the windings. रोटर रेजिस्टेंस 0 होगा तो स्लिप 0 होगी. So maximum slip will be 0. हाँ, तो स्लिप क्या है? स्लिप तो एक वो है, मैक्सिमम स्लिप इज 0. स्लिप तो एक पैरामीटर है. Yes, sir. So torque would be infinite if rotor resistance would be 0. So very will be 0. सर रोटर रेजिस्टेंस 0 होने पे टॉर्क 0 होगा. पावर की इक्वेशन क्या होती है? अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करो, पावर की इक्वेशन क्या होती है रोटर सर्किट की पावर? सर आई स्क्वायर आर. आई स्क्वायर आर. आर 0 कर दिया, रोटर सर्किट की पावर 0 हो गई. यस सर, पी बाई ओमेगा 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया. ठीक है. दूसरा
चीज जो होता है, ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिप्रेजेंट करता है, वो उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? स्टेटर का फ्लक्स रोटर का फ्लक्स प्लस इनटू साइन, एंगल बिटवीन द, हाँ क्या, साइन एंगल 90 प्लस थीटा, और यहाँ यस सर, पर थीटा आपका क्या हो जाता है, 0 डिग्री। यस सर, अब जब 0 हो जाता है तो साइन उसमें क्या बोलते हैं, वो 0 आएगा और वो उसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। वो फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या क्या होता है टॉर्क का, ठीक है ना। सर, ओके सर, ओके, कैन यू ड्रॉ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर? यस सर, ड्रॉ करके बताइए, और उसमें मेरे को पुल आउट टॉर्क मार्क करके दिखाना, वेयर इज द पुल आउट टॉर्क। सर ये पुल आउट टॉर्क नहीं होता, ये होता है मैक्सिमम टॉर्क। यस सर, पुल आउट टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, उससे पहले थोड़ा सा ये नीचे की तरफ कर्व आता है और फिर ये ऊपर बढ़ता है, फिर नीचे आता है। तो जो नीचे वाला लेवल होता है वो पुल आउट टॉर्क होता है, इसलिए लोड टॉर्क मस्ट बी ऑलवेज लेस देन पुल आउट टॉर्क। लोड टॉर्क must be less than pull out torque. So और means pull out torque is just above the load torque. अरे लोड टॉर्क होता है, हाँ इंडक्शन मोटर का पुल आउट टॉर्क जस्ट अबव द लोड टॉर्क होता है। लोड टॉर्क मतलब मैक्सिमम लोड टॉर्क कितना दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, इसको देख, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बना के देखना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सही बनाई नहीं है, ठीक है। ओके सर, 1 मिनट होल्ड करो, मैं आपको दिखाता हूँ। sir it's blur. Team. अब देखो, टी स्टार्टिंग से थोड़ा नीचे आके टी पुल आउट होता है और फिर उसके बाद टी मैक्स और फिर नीचे आता है। सर पुल आउट टॉर्क की डेफिनेशन क्या होगी सर? That can be applied on a induction motor. It's a maximum torque that can be applied on the induction motor. तो सर ये तो टी मैक्स ही हो गया। टी मैक्स तो होगा जब आप ये रनिंग कंडीशन में आ गया, ठीक है ना, तब आपका टॉर्क
हम बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क ओके कैन बी, ओके हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो क्राउलिंग कॉगिंग का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ठीक है ना। यस सर, यस सर। क्राउलिंग कॉगिंग जो है, इसी वजह से जब आपका पुल आउट टॉर्क के बराबर हो जाता है, ठीक है, यस सर, उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो स्टेबल कर्व आपका टी स्टार्टिंग और पुल आउट टॉर्क के बीच में आ जाता है, वहीं पे वो क्राउल करने लगता है। यस सर, ठीक है, यस सर। चलो पुनीत, अब आप पढ़ाई करना, थोड़ा सा तो नॉलेज तो है आपको, लेकिन थोड़ा सा इसको और ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है।